Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. So, my dear students, quickly take out your GK books and we will start our lesson number 4 today. And the name of our unit is the Natural Environment and Resources. So, my dear students, quickly open unit number 12 in your books and we will start with the recap of lesson number 3. You have to answer a few questions. Quickly answer them. What are the benefits of land? ज़मीन क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमें क्या क्या फायदे पहुंचा रही है. क्विकली थिंक एंड आंसर. वेरी नाइस. Crops, we can grow crops on it, we can do construction on it, we are getting coal from it, we are getting natural gas from it. So a lot of benefits of land. What types of crops are grown on land? Name a few crops which we are growing on the land. Very nice, good. Rice, wheat, maize. These are a few crops that we are growing on land. What is water used for? Okay, another resource, natural resource that we studied in lesson number 3 was water. Now tell me, what is water used for? Name a few uses जो आप daily basis पे use करते हैं water को जिस लिए, तो वो आप जल्दी से मुझे बताएं. For drinking, washing, bathing, watering the plants, and energy. Why do living things need water? Living things need water to stay alive. Very nice. So my dear students, as you know that we are discussing all about the natural resources. So we discussed about the sun and we discussed about the land. Then we discussed another natural resource which is water. Today we will discuss about another natural resource which is air. And my dear students, you know कि आप air को देख नहीं सकते पर आप इसको feel करते हैं. जब भी whenever air is moving, you can feel it. ये आपको feel होती है move करती हुई, ठीक है? जैसे the plants are moving, आपकी skin को touch होती है तो you can tell that the air is moving. So my dear students, air के क्या क्या फायदे हैं? Just like water, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. Similarly, because of air, we cannot stay alive. So air is a mixture of few gases. कुछ gases हैं, उनको मिलाकर हवा आपकी बनती है. तो उसके अंदर main 2 gases जो हैं वो है oxygen and carbon dioxide. You can also see them on your screen. So the human beings need air to stay alive. ठीक है, वो हवा में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं. They take in oxygen from the air and plants take in carbon dioxide from the air for breathing. तो दोनों plants and human beings need air for breathing. सांस लेने के लिए उनको हवा में से 2 gases चाहिए. Human beings and animals need oxygen and plants need carbon dioxide from the air to breathe. Okay? तो दोनों plants, animals and human beings need air और वो उनमें से अपनी अपनी मर्जी की गैसेस ले लेते हैं ब्रीदिंग के लिए. अगेन आई एम टेलिंग यू, कौन सी गैस लेते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स? ऑक्सीजन. एंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. एयर इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज कंबशन. कंबशन कहते हैं किसी चीज को जलाना, बर्निंग ऑफ समथिंग. सो बर्निंग नीड्स एयर. उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है एयर में से टू बर्न. तो आप मैच स्टिक, व्हेनेवर यू आर बर्निंग अ मैच स्टिक और द फ्लेम ऑन योर स्टोव, सो इट नीड्स एयर और ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू बर्न. सो दैट इज कॉल्ड combustion. Combustion. Okay? Combustion. So my dear students, these are a few uses of air. Now we will look at the student learning outcome for today, which is given on page number 85. Let's quickly have a look. Today we will recognize the natural resource and we will recognize air as a natural resource and essential, why it is essential for the survival of human beings, and we will also recognize its importance. Okay?
तो आज हम एयर को डिस्कस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे. सो वी विल क्विकली लुक एट दिस इस्लामिक पर्सपेक्टिव. एज यू ऑल नो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सब रिसोर्सेज बनाए हैं ताकि हम इनसे फायदा उठा सके. लेट्स क्विकली हैव अ लुक. It is God who made the earth for you to settle and the heavens as a canopy. He designed you and perfected your design and provided you with wholesome things, such as God your Lord. So blessed be God, Lord of the worlds. सो अल्लाह ताला ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं. हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए. हमारे ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है और हमारे फ़ायदे के लिए इन दोनों चीज़ों में बहुत सारी और भी रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने बनाए हैं. सो वी मस्ट बी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू अल्लाह ताला और हमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना चाहिए. ठीक है. सो फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. क्विकली आंसर, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? क्योंकि अब हम कॉन्स्टेंटली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले आपको ये आंसर करना है व्हाट इज अ रिसोर्स. अ रिसोर्स इज एनीथिंग व्हिच इज इन अबंडेंस एंड इट इज यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड्स. हम अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए उस जो ज़ख़ीरा है या जो इतनी ज़्यादा चीज़ है हम उसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, देन इट बिकम्स अ resource. और वो ज़्यादा भी होना चाहिए. On a hot summer day, how do you feel when wind starts blowing? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अचानक से ठंडी हवा चलने लग जाती है तो how do you feel? We feel very cool down, we feel very good, we feel very comfortable and pleasant. So from here we will move forward towards page number 89 as your reading page. Quickly pause the video and open page number 89. I hope everybody has opened page number 89. So my dear students, let's quickly start reading क्योंकि मैं आपको already बहुत सारी pictures भी दिखा चुकी हूँ, air के uses भी बता चुकी हूँ. Let's quickly start reading. Put your fingers on your books where I will read. Air. Air. Air, just like water, is also a natural resource. It is non-living and present all around. Importance: all animals and plants inhale air. Humans and animals use oxygen of air for breathing, whereas plants use carbon dioxide. Air helps in combustion. Air maintains the temperature of the atmosphere. All these resources are precious gifts of Allah Almighty. We must use them with care. Wastage of these resources will leave us with a huge energy shortage. So my dear students, let me quickly explain this to you. आपको पता है कि जैसे पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है as a natural resource, air is also extremely important. ये हमारे हर तरफ होती है. Air is all around us. And as I told you, it is a mixture of gases. कुछ gases का mixture है air. और plants, animals and human beings, everybody needs air for breathing. ठीक है? So plants and animals and human beings take in oxygen from the air, whereas the plants take in carbon dioxide from the air for breathing. Next, combustion. Air is used in combustion. Burning के लिए use होती है. कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं तो उसके लिए हमें हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर हवा प्रेजेंट नहीं होगी तो आपकी चीज़ इट विल स्टॉप ब्लोइंग. ठीक है. और उसके अलावा आपके जो हवा का टेम्परेचर है, जब मैंने आपको एज आई टोल्ड यू कि जब गर्मी होती है तो हवा चलनी शुरू हो जाए तो आपको बहुत अच्छा या प्लेजेंट फील होता है और टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाता है. तो एयर जो है इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर. वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कैसे. सो माई डियर स्टूडेंट्स, okay, so for the supervised activity number 1, make groups of students, each one of the natural resources present in the school,
Instruct them to study about the allocated resources and then share the findings with the class. Their study must consist of all these things. ठीक है? So my dear students, आपकी teacher जो है they will divide you into the groups और हर group को जो है वो एक resource जो आपके school में आपको नजर आ रहा है, it could be sun, it could be air क्योंकि वो हर जगह है, it could be water, कोई भी चीज़ जो आपको नजर आ रही है as a natural resource वो आपको select करनी है और उसके बाद आपको उसके बारे में बताना है कि उसका natural resource क्या है, उसकी लोकेशन क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल सन हर जगह होता है तो एवरीवेयर, हवा हर जगह होती है. ठीक है, इसी तरह पानी, आपका पानी कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. देन इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड. फॉर एग्जांपल एयर एंड sun energy is unlimited, तो आप you will write unlimited. Let me show you the table. This is the table. और इस तरीके से जो है आप अपने टेबल को फिल इन करेंगे. आप सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स लिखेंगे, लोकेशन, यूटिलाइजेशन, लिमिटेड एंड वेज टू कंजर्व. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आई टुक सन एज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज फाउंड एवरीवेयर. एंड इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, ये हमें हीट और लाइट देता है. इसकी जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है. और कंजर्व कैसे इसको करना है, तो आप सन एनर्जी को यू कैन नॉट कंजर्व इट, सो डैश मैंने वहां पर लगा दिया. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डिवाइड द ग्रुप्स और हर ग्रुप जो है वो एक रिसोर्स लेगा. सो फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड. ये आपका होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको होमवर्क में एक दफा दोबारा रिमाइंडर भी दे दूंगी. ओके, फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स, सॉरी, यहाँ पे टीचर्स नोट यू कैन सी इट, डिस्कस विद स्टूडेंट्स द रोल ऑफ एयर in the temperature regulation by discussing cold air and hot air. So my dear students, cold air and hot air, जब भी आपके कमरे में जो हवा गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर चली जाती है. ठीक है, और ऊपर से ठंडी हवा जो है वो क्योंकि हैवी होती है वो नीचे आ जाती है. तो दिस इज हाउ आपकी जो टेम्परेचर रेगुलेशन होती है विद इन योर एटमॉस्फेयर, विद इन योर रूम, वो इस तरीके से रहता है. दैट मीन्स कि कोल्ड एयर, हॉट एयर जो है वो ऊपर चली जाती है और कोल्ड एयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है. तो दिस इज हाउ टेम्परेचर मेंटेन्स. मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ इन योर एनवायरमेंट कि जब भी हवा गर्म होती है तो गर्म हवा ऊपर चली जाती है, ऊपर जाकर ये दोबारा ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर क्योंकि ये भारी हो जाती है, इट बिकम्स हैवी, तो इट कम्स डाउन. तो ये सर्कल जो है एयर का चलता रहता है एंड दिस इज हाउ द टेम्परेचर रेगुलेट्स. अगर गर्म हवा नीचे ही रहेगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो इट मस्ट कूल डाउन एंड देन कम डाउन अगेन ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहे. सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर रेगुलेशन बिकॉज ऑफ एयर. एयर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रैक्टिस. क्विकली ओपन पेज नंबर 96 and we will do question number 4. Why is air a natural resource? What is its use? Air is not man-made and it is found everywhere on earth. That is why it is a natural resource. और इसका use क्या है? It helps in breathing, combustion and maintains temperature. So you can write the answer in your notebook. Next question is question number 5. Can living things such as plants and animals be considered as natural resource? Yes. Plants and animals are natural resources, but they are living natural resources. So, yes, plants and animals are natural resources. For example, a hen, you are getting eggs from it, so it is a natural resource. Plants, you are getting vegetables and fruits from it, so it is a natural resource. Then, question number 6, where do fish live? मछलियाँ कहाँ रहती हैं? Very good. Water. Do it in your notebook and we will move forward towards your worksheet. Worksheet number 5. You will write down your name and your class. In here you can see it. Look at the pictures carefully and write the uses of the air. Take help from the word box given below. Also color the pictures. Maintains temperature, breathing of plants and animals, oxygen and carbon dioxide, combustion. So here you can see the first picture. I will do the first one for you. You will do rest by yourself. So the boy is taking in oxygen and the plant is taking in carbon dioxide. So air helps in breathing. Animals
take in oxygen. Plants take in carbon dioxide. Okay, this is how you will fill in your worksheet. Okay, you can pause the video and you can fill it in. For your evaluation, my dear students, let's quickly look at the page number 94. So, my dear students, here you can see why is air important for us? Because we cannot live without air. It helps us in breathing. How would our life be without air? We cannot live without air. Air is extremely important. आप 2 मिनट के लिए सांस बंद करें, you cannot survive. So, from here, we will move towards homework. It is given on page number 89. So, homework activity number 3. Find out the countries that depend largely on seafood. Make a list of these countries along with their seafood items. Find out at least 10 water resources present in Pakistan and make a list too. So, my dear students, आपको जो है पानी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेसन में, तो आपको वाटर के बारे में जो है वो लिस्ट बनानी है और उसके बाद जो है आपको उसके बारे में जो है वो उसके बाद जो है आपको रिसोर्सेज भी जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं. ओके, सुपरवाइज एक्टिविटी नंबर 1 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो दिस इज हाउ यू विल डू इट. यू विल मेक अ टेबल इन योर कॉपीज एंड यू विल डू इट लाइक दिस. फ्रॉम हियर वी विल मूव टुवर्ड्स द रैप अप. Any natural thing that present in abundance and meeting a people need is called a natural resource. Resources which are not made by man are natural resources. Air provides us with life gases. It supports combustion. It maintains temperature. I hope you have enjoyed the video. Keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.